समस्त देखा शुभुची ऐसा মইতি কোথায় গেল? यस सर कौन बुझियो टिके टिके देखुचो तो वीडियो आस्ते आस्ते देखुचो ना नहीं? हाँ सर हां टिके टिके देखुता नले हबुनी। संतोष प्रीतम बेहरा संतोष कौन खबर? हेलो Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग Hello. Good morning, sir. टिके टिके पढु हां टिके टिके देखुचो ना नहीं वीडियो वगैरह ऐसे जो कहिथिली काली? Yes, sir. Yes, sir. कल dipole moment टा देखुଥିଲି sir. हां ठीक 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 खाली देखिले हबनी खाता रे लिखि रखो होला। Sir. कोउथरे सब पढुचो लैपटॉप रे ना मोबाइल रे? Sir mobile ले. लैपटॉप जहार लैपटॉप किबा कंप्यूटर थिबो डेस्कटॉप थिबो इट इज बेटर टू जॉइन देयर ओके जॉइन फ्रॉम लैपटॉप ओके ठीक है भल देखा जियो माने निजो को कंफर्टेबल लागियो पढिया पे जहार नाही से माने मोबाइल रे चलेबो और कम करिया और स्क्रीन देखाउची स्टार्ट करियो हैं अरे मृत्युंजय जो तळे किछि ब्लैक स्पॉट आसुची कि रे स्क्रीन रो तळे किछि ब्लैक स्पॉट के नोटिस करछो कि any kind of black spot near the screen ना सर ठीक है ठीक है अच्छा ये सब जिन तो पढ़ी काली ये सब फॉर्मूला ये सब जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करथिले तापर एटा ओम्स लॉ विषय रे कहथिली है ना तो करंट डेंसिटी एंड जे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी विथ रिलेशन आज कहबा ओम्स लॉ काली कहथिली v equal to IR that this is not the definition of Ohm's law. Ohm's law रो definition होची माने करंट वर्सेस वोल्टेज टा ग्राफ टा लीनियर जेतेबेले हबो ओके if the current versus voltage graph is linear in that case you can say that that conductor or that material obeys Ohm's law okay but whenever you find graphs like this non-linear graphs like this okay so this is not linear but still you can find current from this current or resistance of this kind of vi characteristics graph vi graph vi characteristics है through same from the same equation you can find the resistance but the graph in this case is not linear but how to find the resistance you have to calculate the slope okay slope is what delta I by delta v this is slope okay so that means a point ru a point जदि हमें calculate करछे तार slope टा भारी केमती ए पॉइंट रो गोटे नॉर्मल एठी ड्रा कलो एठी गोटे नॉर्मल ड्रा कलो एटा को नेलो डेल्टा आई दैट मींस पॉइंट एंड दिस पॉइंट सपोज हियर this is called delta I similarly this is
delta V. So that is the slope, and that is slope is equal to 1 by R. So similarly V equal to Ri eta hala. Okay. तो एमिति ए इक्वेशन रे हम बाहर करबा करंट वोल्टेज इक्वेशन रू ही हम रेजिस्टेंस बाहर करू बट जेतले ग्राफ लिनियर न हे कि नॉन लिनियर हे जाए in that case we can say that the conductor or the semiconductor or whatever the material doesn't obey Ohm's law. Okay, so this V equal to IR is not a not the definition of Ohm's law, but the definition of Ohm's law is the potential is directly the current passing through a conductor is directly proportional linear, okay, proportional to the potential difference across its end. तापरे temperature coefficient of resistivity हमें पढ़ी चे काली. Okay, so different materials at different temperatures the resistivity vary. Resistivity is a function of temperature and तापरे reference temperature गोटे जदि room temperature को नवा reference temperature, any temperature if you take, so that becomes your reference temperature, and you want to calculate at a at some other temperature the resistivity, you can calculate by that relation. Again, this relation sigma minus sigma 0 is equal to sigma 0 alpha t minus t0. This relation is also valid for the materials who possess Ohm's, who obeys Ohm's law. Okay, so the materials who possess obeys Ohm's law, so in those cases this relation is valid, or this relation ki kaun likhila. Sir, can you please make your voice a little louder? Madhusmita Rath. Okay, तमर साउंड टा टिके बढ़ाओ, मोबाइल रो साउंड टा बढ़ा, मोबाइल किंबा लैपटॉप रो साउंड टा तमर बढ़ाओ, मोर तो फुल अच्छी बोधे. Okay, let me see. Now is it audible, Ratha? Hello. मोर भी फुल अच्छी एबे जे सुबुनी आ कुछ करी होनी. मोर भी साउंड पूरा फुल अच्छी है. So suppose V equal to IR, that is एटा जोटा कहउथली. So this relation validates for the material who obeys Ohm's law. Okay, so it देखिबा आ गोटे जिंस मु काली कहउथली कोन E equal to जो हमर relation गोटे थिला तापरे गोटे टर्म आसिला कोन करंट डेंसिटी जो टर्म आस्तिला ओम्स लॉ हिसाब रे जदी देखिबा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इनटू J. Okay, so electric field is equal to rho into J, where rho is the resistivity, and you can write like this: electric field is equal to 1 by sigma J. Okay, 1 by sigma is reciprocal of resistivity is conductivity. Okay, so in that case you can write J equal to sigma E. You can write from this equation, you can write like this: current density is equal to sigma E. These are various forms of equation. Problem जेतले आस्तिबो गोटे डाटा देइथिबो तुमको फाइंड आउट करियो पड़िबो which formula we have to put to solve the problem. So these are different forms of equation. Okay, so एटा कोन होए ए जो कोन कहली हाँ आ गोटे दीटा पॉइंट लिख, गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट लिख. एटा तो कहइथिली Ohm's law is not a fundamental law of nature but rather an empirical relationship valid only for certain material. Okay, तो आ गोटे जिंस लिख, a conducting device गोटे स्टार मार्क देकी लिख, a conducting device or conductor, okay, obeys Ohm's law when the resistance of the devices, when the resistance of the conductor or conducting device is independent of
the magnitude and polarity of the applied electric field or the applied potential difference. Okay, so I'm jemti mo relation dekheli that it is valid for some cases, it is not valid for all the cases. Okay, so in what are the cases where a conductor or a conducting device obeys Ohm's law? तो तार केते गुटे के मेरिट माने important points अछि. A conducting device obeys Ohm's law when the resistance of the device is independent, not dependent. Okay, independent of the magnitude and polarity of the applied potential difference. That means resistance the resistance is actually doesn't depend upon I or V, rather it is a property of the material. It depend करे तार area ऊपर depend करिवो सेटा अलग कथा जेतले डिवाइस आमे उठे छोटो माने कोन सिलिंड्रिकल शेप रो रेजिस्टर नै गेले किबा गोटे स्फेरिकल शेप रो रेजिस्टर नै गेले सेटा रो एल बाय ए जोटा काली कहउतली सेही हिसाब रे सेटा डिपेंड करि पारे, बट it is independent of the potential and the magnitude and polarity of the applied potential difference. Okay, now what important point kon, a conducting material or a conducting device, okay, obeys Ohm's law when the resistivity rho hala resistivity rho of the material is independent of hala magnitude and direction of applied electric field. Magnitude and direction of applied electric field. हला ए दीटे पॉइंट तमे मन रखियो पड़ियो हला. सो एटा गोटे कथा हला जे पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर तार कोनोसी प्रभाव नाही, रेजिस्टेंस ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस तमे बढ़ा कमाओ that doesn't depend upon the potential difference, and resistivity rho is independent of the magnitude and direction of the applied electric field. माने rho जोटा that is independent of माने एठी जदियो हम लिखुचे J equal to 1 by rho into E rho sorry कोन एटा rho into E जोटा हम लिखुतले E equal to कोन एटा हां E equal to rho J जो जदियो हम लिखुतले, but that is independent of the माने कोन magnitude and direction of the applied electric field. ये दीटी जिंस माने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रे कोन हेथिवो पचार थिवो if a conductor is obeying Ohm's law, which of these options are valid? तले देथिवो it is independent of गोटे पॉइंट रे देथिवो it is independent of the polarity or the magnitude of potential difference. Out point the resistivity is independent of magnitude, the resistivity depends on magnitude, none of these एमती कोन गोटे क्वेश्चन देथिवो त को दीटा आंसर करेक्ट कि तीनटा आंसर करेक्ट एमती ऑप्शंस आसी थाए. ओके, सो यू हैव टू put माने क्लिक द राइट ऑप्शन. ओके, सो तापरे आमे गोटे देखिबा माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ काली जेंति कहउतली केते गोटे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अछंती एंड केते गोटे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अछंती. माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ. ओके, सो ता पूर्व मु जेंति काली गोटे प्रॉब्लम देली हमर रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट माने रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड रेजिस्टिविटी देछि हमें रेजिस्टेंस बाहर करले का पई एल्युमिनियम पई बाहर करले एंड ग्लास पई बाहर करले. हमें देखले जे ग्लास रो रेजिस्टेंस बहुत अधिक है. सो those kind of stuffs are actually used for insulating materials. जोठी हमर दरकार माने गोटे कंडक्टर जोठी की माने गोटे कंडक्टर को हमें यदि यूज करबा टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट्स, द रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेठी हम कहि परिबा जे that conductor is used as a resistor. Okay,
So the even tame question pacharibo je sir why not a insulator? Okay, so insulator ro alaga kamo, conductor ro alaga kamo, mane eti conduction भी होबो किंतु similarly insulation होबो. तो देखो it is different types of materials are there. So depending upon your applications, whether you are applying it for that means low energy electronics like in mobile devices or whatever, yeah. Whether you are using it for transmission lines, whether you are using for highly insulating माने ये जो current wires सब जाउची हमर poles गुडा करे सेठी गोटे गोटे point रे हमकु insulation दरकार जोठी की जदी connectivity fail हैला से माने आसी काम करिवे कि जाहा करिवे जोठी जोड़ा हिथो joints गुडा तो सेठी हमकु insulating materials दरकार तो सेही जगह रे हम केमति कोन ये करिवे माने को material यूज करिवा depending upon the resistivity हैला ये देखो silver रा resistivity is almost of the order of 10 to the power -8. Similarly, copper, gold, these are all metals. Okay, aluminum, manganese is a alloy. Okay, and tungsten, iron, platinum, these are all metals. Okay, so in these cases, the resistivity is of the order of 10 to the power -8. That is very low resistivity. That means these materials or these elements are highly conducting materials. Okay, conducting materials. Okay, similarly semiconductors, look at this semiconductor. Suppose pure silicon or 10 to the power 3 is the resistivity is very high in case of pure silicon. But when the silicon is doped, okay, I mean semiconductor se padhiba what is doping mane gote impurity ame jetale add karu gote material re, so that process is called doping. Okay, so whenever you are doping silicon with n type p type kono mane kemti acceptor donor doping hue. So in depending upon acceptor or donor doping, you can say it is n type or p type. n type p type mane n type mane electron ta bhitere introduce होउचंती माने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करछे गोटे प्योर मेटल भितरे, एंड पी टाइप माने होल्स आमे कोन करछे इंट्रोड्यूस करछे. होल्स इज ए इमेजिनरी कांसेप्ट माने गोटे पॉजिटिव चार्ज आमे ता भितरे डेवलप करछे. तो सेटा देखिबा सेमीकंडक्टर रो डिटेल थ्योरी रे सेटा पर देखा जिवो. किंतु देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन और एन टाइप ऑफ सिलिकॉन, पी टाइप ऑफ silicon. So see, it देखो 10 to the power 3 resistivity थिला, but whenever you are doping with some other impurities, it becomes the conductivity is drastically improved or the resistivity is drastically reduced. Okay, so 8.7 into 10 to the power -4 हे गला. 10 to the power 3 माने 1000 ohm, ये जो ohm meter ना resistivity रो जो हमें यूनिट कहथिले. So 1000 ohm meter रे थिला, but एबे हे गेला 10 to the power -4 ohm into meter. Similarly p type रे सेम देखो 10 to the power -3 ऑर्डर रे आसी गेला resistivity. Glass, fused glass किबा quartz जोटा सिलिका कहउचे, they are typically insulators जार की resistivity is very high. That means 10 to the power 10 order. Okay, 10 रे 10 टा सुनो. तो that ohm meter माने सेटा very high. So these are all insulators. एगुडा को हमें कहि परिबा 10 to the power -4 ऑर्डर रे जो माने सब अछंती, तो से गुडा को कहबा हमें कोन सेमीकंडक्टर्स. तो 10 to the power -8 ऑर्डर रे जहार रेजिस्टिविटी अछि, तो कंडक्टिविटी सिमिलरली तार माने जो यूनिट होची साइमेंस पर मीटर कोंती एस माने सेटा साइंटिस्ट को नाय रे हेची किबा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. Okay, so these are the units of conductivity mane 1 by rho, that is sigma. Okay, so this conductivity that sigma mane conductivity, charge density mane madhya conductivity जोटा electrostatics chapter पढै दिली, कंफ्यूज होबनी हला. तो एमथि सब विभिन्न मटेरियल मानकर विभिन्न ई अछि. एडी जे देखैली एडी ग्लास इन्सुलेशन ई सब जो पॉइंट उडा ग ई सब गोटे गोटे पॉइंट, दीज आर ऑल ग्लास इन्सुलेशन, ग्लास इंसुलेटिंग डिवाइसेस. जेहेतु कि तार रेजिस्टिविटी हाई, ये जो रेजिस्टेंस हाई, ये सब मटेरियल
तो सेति भाई ई सब गोटे गोटे जॉइंट जगह रे ग्लास इन्सुलेशन दिया हिची टेलीफोन वायर सब जाइछि हैला सो हां कोन कहथिले माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ हमें देखिबा तो माइक्रोस्कोपिक व्यू अच्छा माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ माने किबा माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जदि हमें देखिबा फॉर द टाइम बीइंग एटा मन रखिबा जे वी आर डीलिंग विथ क्लासिकल फिजिक्स ओके बट जनरली एटम्स इलेक्ट्रॉन्स एगुडा को प्रोटॉन्स न्यूक्लियस ए माने सब क्वांटम फिजिक्स लॉ सैटिस्फाई करंती दे डोंट ओबे क्लासिकल फिजिक्स लॉस दे ओबे क्वांटम फिजिक्स जोटा कि आउट ऑफ द स्कोप माने एबे फॉर द टाइम बीइंग इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर स्टडी ओके सो क्वांटम फिजिक्स जनरली हमें प्लस 2 पर जनरली डिटेल्स रे पढ़ा है क्वांटम फिजिक्स हमर एबे प्रिलिमिनरी आईडिया किछि किछि दिया जीवो जेतले मॉडर्न फिजिक्स मु पढेबी एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स एगुडा सब पढेबी सेतबे क्वांटम फिजिक्स रो किछि किछि बेसिक जिंस आसी जो ओके डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड ऑल सो सेगुडा सब आसीबो सो जनरली हमें अज्यूम करबा जेतले इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टाको हमें देखिया पे चेष्टा करबा हां कि मृत्युंजय कोन हलारी हां तो आमे जेतले कंडक्शन रो फेनोमेना टाको स्टडी करिया पे चेष्टा करबा आमे गोटे मॉडल नबा ते जो इलेक्ट्रॉन माने मूव करचंदी गोटे सॉलिड नबा गोटे सॉलिड मु कहिथिल ना सॉलिड लिक्विड गैस विषय कहिथिली कंडक्टर सेमीकंडक्टर इन्सुलेटर विषय कहिथिली गोटे सॉलिड एलिमेंट नबा जोटे कि एटम माने बहुत पैक हेगिरे अछंती ए सॉलिड भितरे एटम्स एगुडा ए जो गोल गोल गुडा मु बोलौछि these are all let us assume that these are all atoms inside a solid and very closely packed okay so atoms मानक चारि पटे कोन अछंती इलेक्ट्रॉन्स अछंती suppose these are atoms so atoms मानक चारि पटे इलेक्ट्रॉन्स अछंती so metal case रे those are metals or those are conductors so metal case रे free electrons माने थांती हमें जानि so electrons they can move out of the electronic shell जो इलेक्ट्रॉन शेल माने थांती ना एटम रो चारि पटे जो इलेक्ट्रॉन माने बुलंती k l m n you know it so these free electrons these valence electrons they are able to move out of this atomic field okay atom जो टाणी की जो धरी थाए they are able to move these free electrons are able to move out of this atom and they in a solid they move they try to move okay so same मान को कहा जाए हमें free electrons जो movement हुए सेटू current develop हुए so these free electrons suppose they are moving so let us assume here it is there is a electron so this electron this cross is electron let us assume so this cross symbol electron is moving and while in the course of moving okay so there prathame kon thae random motion this electron can move हाँ yes सर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है हाँ क्या बोले मतलब क्या हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे yes, अच्छा ठीक है मैं बोल रहा हूँ ठीक है yes, sir. okay so suppose there are atoms inside a solid okay as I have already said about solid liquid gases in solids whatever what happens is suppose the atoms are closely packed with each other in liquid they are loosely packed and in gaseous state it is highly loosely packed okay so it is a preliminary idea so the atoms in solids what happens suppose there is a metal let us take a copper is a metal okay so in this copper metal copper atoms are there and they are closely packed with each other okay so एक कॉपर में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो होता है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है that means outermost electrons in metals the outermost electrons are able to free themselves whenever you are applying some temperature even at room temperature they are free okay they are free to move so they are out of this atomic field they can be escape the atomic field okay so they can move in a particular direction
So in whenever there is no electric field, whenever this conductor is not connected to any battery or any electric field or potential, so the electrons are randomly moving. As I said in the last class, there is a random motion of electrons. So suppose there are 100 electrons in this volume. So 100 electrons are moving in all possible directions. So what will be the average displacement of electrons? That will be zero, because more or less it is cancelling each other. Suppose 20 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई भी डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो एवरेज अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी जीरो. एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो. बट as I said earlier, that whenever a conductor is connected to a potential, okay, suppose the two ends of a conductor are connected to a potential. Suppose this is a positive potential and this is negative potential, okay. So in that case what happens, the electrons tends to move in a particular direction. So this is the model, this figure. Look at this figure. See this figure A. So this is the random motion of electrons. That means suppose let it be there is a electron here, or the position was previously, suppose this small whatever drawn here. So this is small position here, and this electron is moving in a suppose particular direction. Then from this point it is moving in a particular direction. Why? Because suppose this electron is from this place, this point to this point, it asila. Okay. So after this electron comes at this position, suppose Q, this is a point P and this is point Q. So after that this electron comes to this position, so there must be an atom, because in solids there are atoms arranged. Okay. So this electron, suppose there is an electron here, from this position to this position, suppose it is coming, and here this electron come across another atom, it collides with another atom or another electron. Okay, it collides. Okay, so in this case this electrons imparts whole energy or a partial energy to this atom. Okay, there is a bombardment of electrons and atoms are going on. Okay, so what happens, दिस इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जो बोल रहे हैं, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा नहीं कि बहुत जोर से मतलब इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है कंडक्टर के मतलब कंडक्टर के अंदर. जनरली रैंडम मोशन का अगर हम कॉपर के केस में बोलेंगे तो जनरली, और एनी मेटल के केस में बोलेंगे तो रैंडम मोशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, सपोज उसका एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हेनेवर द कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू ए बैटरी. So that is of the order of 10 to the power 6. Okay, so 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में ये मूव कर रहा है. कौन? इलेक्ट्रॉन. रैंडम मोशन में अगर हम लोग देखेंगे, पर क्या होता है कि अगर उसको हम लोग इस मतलब जब एक बैटरी के साथ हम लोग जोड़ लेंगे मैंने तो उसका क्या है वेलोसिटी हो जाता है, उसका वेलोसिटी हो जाता है 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड. That is called drift velocity, that tendency to move in a particular direction. You see here in the second figure, look at this. So suppose अरे এটা দেখাউছি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳ ଫିଗରଟା, B ଫିଗରଟା. हेलो, Yes, sir. this B. So suppose there is a electron here, there is a electron here, and this electron whenever it is connected to a electric field, okay, so electric field जिस direction में होगा और उसके just opposite side में electron flow करेगा. assumption हम लोग पहले क्लास में लिए हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है कि this electron is moving in suppose this direction, but after this electron is moving to this point, there is a suppose resistance developed here, and again from again the electric field is continuous. इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंटिन्यूअसली दे रहे हैं बैटरी के माध्यम से. सो इस पॉइंट से फिर थोड़ा घूमने के लिए शुरू करेगा, तो फिर इस पॉइंट से फिर यहाँ आने के लिए उसको टेंडेंसी टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन.
So that is called drift velocity, or that speed at which the electron is moving, that is called drift velocity. That means whenever you are connecting a conductor to a battery, or you are giving a potential difference, okay, so what is happening, there is also random motion of electrons, there is a random motion of charge carriers or electrons, but at the same time there is a tendency to move in a particular direction, okay, but that tendency is again halted by the collision of electrons with other atoms. So we have to make some assumptions. So this model is called free electron model or ideal gas model. Suppose in this case we are assuming these electrons to be gas molecules placed inside a container. जैसे केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में जो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन पढ़े होगे तुम लोग, तो इसमें क्या होता है कि एक गैस मॉलिक्यूल्स दे आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस, रैंडम मोशंस. So similarly, in case of a solid, we are assuming that in case of a metal or solid, we are assuming that electrons are freely moving like a gas molecules placed inside the container. Okay, so in this model we assume the motion of an electron after a collision. In that case, in free electron case, हम लोग क्या assume कर रहे थे पहले, ये जो free gas equation, दे एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट को आया. Okay, so here suppose there is a collision occurring. So from this point to this point or any other point before collision, मतलब उसका जो past collision है, the second travel, this is suppose first travel and this is second travel. This second travel of electron is independent of the past history. मतलब ये पहले किसके साथ कोलाइड किया था, उसका स्पीड कितना था, क्या था, we are least concerned about it. Okay, so in order to prove some that means a average behavior, we are assuming certain properties. But in quantum mechanics, जब हम लोग quantum mechanics में जाएंगे, so you have to calculate all such collisions and all. You cannot assume. In certain cases in quantum mechanics you cannot assume, but you have to exactly precisely calculate the properties, the microscopic properties of these microscopic objects like electrons, protons, atoms, neutrons. These are all microscopic properties. Okay, so for microscopic scale you have to go for quantum mechanics, but here we are assuming in the terms of classical physics. So we are also assuming that excess energy acquired by the electrons in the electric field. Suppose electric field दे रहे हैं, electric field देने के कारण क्या हो रहा है, these electrons are moving at a particular speed. So जो drift velocity हम जो बोले, so energy is acquired by the electrons that is lost to the atoms of the conductor when the electrons and atoms collide with each other. Okay, जो अरे कौन रे किए इधर Suraj. Okay, so the electrons and atoms collide. Okay, the energy given up to the atoms increases their vibrational energy. ये जो electron is moving, so electron is moving and colliding with a suppose certain atom. So ये जो atom के साथ जो collision हो रहा है, that means this electron is giving some energy to this atom. So due to in this process, in this continuous process, what is happening here inside the conductor, the atoms का जो vibrational energy, so atoms are vibrating at a even at absolute zero temperature, atoms do possess some vibration. Atoms are vibrating above their mean position, so vibrational energy increases. Okay, so due to this increase in vibrational energy, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो एनर्जी कैन नाइदर बी कन्वर्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो वाइब्रेशन, व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स आर increasing, that means temperature inside the solid is increasing or inside the conductor is increasing. So generally in real applications if we see जो electric toaster हम लोग use करते हैं, okay, so why the temperature increases? The temperature
temperature increases, the temperature of a conductor increases due to resistance that is utilized in electric toaster. Okay, so इलेक्ट्रिक टोस्टर में क्या होता है, जो एक मेटल जो ब्रेड को टोस्ट करने वाला जो मशीन रहता है, एक प्लेट रहता है, एल्युमिनियम प्लेट या लोहे का प्लेट, ये सब जो रहता है. So why it gets why the temperature gets increased? Even you see the iron जो करते हैं. Okay, so ये सब में क्यों temperature increase? Whenever you are switching on the plug and you are applying some electric field, ये जो atomic motion होता है conductor में, तो electronic motion होता है, so जो continuous bombardment होता है and vibrational energy increases, that is why the temperature increases, and we are applying those devices for certain applications according to our convenience. Okay, so because the collision process is random, each collision event is independent of what happened earlier. That means what, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, जैसे मैंने समझाया, ये जो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को गया. Okay, and here this initial this velocity becomes suppose 0. Again it starts a new path, and again this from this point to this point it starts a new path. But there is a tendency of these electrons from to move from this direction to this direction. Okay, so this tendency is called the speed with which the electrons are moving, we can call drift velocity, and this tendency and the phenomena is called drift. There is a drift. Okay, so this is the microscopic view of the electrons. Okay, so ये जो हम लोग assumption लिए, वो क्यों लिए, उसका कारण क्या है, तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करने के लिए हम लोग इसको assume किए. Okay, so that will be easy for our calculations. So let us see what we can derive out of it, out of these assumptions or out of this free electron model, what we can derive here. So what we can derive here, so we can derive, suppose Vd is the drift velocity. So Vd is the drift velocity, as I have said. And when a free electron of mass m, okay, when a free electron of mass m, or me you can write, mass of the electron, and charge q equal to minus e, you know it, the electronic charge is minus e, and q equal to minus e is subjected to an electric field whenever there is an applied electric field, let us say E. Okay, acha, it experiences a force, it experiences a force. We are assuming that this collision is independent, collision between suppose this point to this point, यहाँ पे collision is independent, from this point to this point it is independent of this path. Okay, मैंने previous collision, first of all we are assuming this model, and then we are assuming, suppose let it be there is an electron here, so and this electric field is applied, suppose. So what is the force according to the electrostatics at an instantaneous point? Let us assume this electron is at rest. Okay, at that point, what will be the force exerted? K koiva force. QE. QE is the force exerted on this electron or charge carrier. So what will be the total force? What will be the total force? सपोज इस कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए डिफरेंट पाथ में जा रहा है या जो भी, तो व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ वी अज्यूम, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स? अगर हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में देखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, अगर एक इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट पाथ में वो जो जा रहा है,
तो टोटल फोर्स अगर देखेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उस फोर्स को क्लासिकल थ्योरी के अनुसार। सो व्हाट विल बी द माने एटा गोटे डेफिनेशन हे गेला, एटा गोटे डेफिनेशन हे गेला। सो व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी QE by me, that means mass of the electron. This is Q is again electronic charge. So I am not writing E here in order to avoid confusion. Suppose Q into E divided by me, that means mass of the electron. So let us assume this is equation 1, equation 2, and here is equation 3. Okay. So this acceleration occurs for a short interval of time because ये जो one collision to मतलब एक collision यहाँ पे suppose यहाँ से यहाँ point आया तो this is called first collision. First collision पे आने के बाद यहाँ पे suppose we are assuming this electron is at rest. So this collision to this collision, ये जो path जो travel जो कर रहा है that is called mean free path. मैं पढ़ाऊंगा बाद में. So mean free path and mean free time उसको बोलते हैं. So distance between two collision is called mean free path, and the time between two collision time between a collision is called as mean free time. Okay. So generally acceleration occurs for a short interval of time. That means ये point से ये point जाने के लिए जो मतलब जिस acceleration, वो acceleration is that is a finite quantity. After it reaches this point, acceleration becomes 0. Okay, so let t be the time since the last collision. Okay, so t be the time between these two points. Okay, and vi is the initial velocity. Initial velocity. Vi is the initial velocity of electrons. Okay, so at time t हम लोग जो laws of motion का जो अगर equation डालेंगे, okay, so so V final is equal to V initial minus AT, V equal to U plus AT जो हम लोग पढ़े हैं. So V initial plus AT, V initial plus AT, or equal to, you can write here V initial plus acceleration का formula क्या है? QE divided by M into T. Okay, so you can write like this. But what is V initial? अगर हम लोग हर किसी V initial को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे V initial 0 था, इस पॉइंट से इस पॉइंट को पहुंचा है, V फाइनल कुछ फाइनाइट है, ठीक है. तो ये इस पॉइंट पे फिर ये V इनिशियल हो गया, फिर ये इस पॉइंट में आया. सो व्हाट इज V इनिशियल? V इनिशियल इज 0 always. So V initial are randomly distributed over all possible directions. So that is why V initial is equal to 0. Okay, so since V initial is equal to 0, अच्छा अभी हम कैसे लिख सकते हैं? V final is equal to QE by M into T. You can write like this. Okay, QE by M into T. So velocity is added by the field during one trip. मतलब क्या होता है? इस पॉइंट से इस ट्रिप को जो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रिप, मतलब एक ट्रिप लिया. ओके, सो इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट को अगर गया तो ये हो गया सेकंड ट्रिप. ओके, सो ये सब ट्रिप क्या होता है? एड अप होके जाएगा, मतलब दैट टेंडेंसी टू मूव इन ए particular direction. So that is why these trips are getting added. Okay, so velocity V final is getting added. So you can write like this. So if the electron starts with 0 velocity, the average value of the second term, that means final velocity, you can write like this. So QE
by m into tau. So this tau is the average distance. That means what you are assuming here, average velocity v average is equal to, मतलब अगर हम हर किसी v फाइनल को अगर कैलकुलेट करते जाएंगे, so v average you will get like this, v average is equal to qe by me, that means mass of the electron, into tau. Okay, so tau, this tau quantity is called average time interval. Average time interval, average time interval between successive collisions. और उसको बोला जाता है क्या, मीन फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम. ओके, एवरेज वेलोसिटी क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट गया वो एक v फाइनल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आया वो एक v फाइनल है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट वो एक v फाइनल है. मतलब टोटल vf जितना इवेंट हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आने के लिए जितना इवेंट हुआ है, तो जितना कोलिजन के थ्रू वो पास करके वो फाइनली इस पॉइंट को रीच किया है, so plus 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 ये सबको करेंगे divided by that number of events, so that you can write here v average, that means average velocity. So that will be again equal to qe by m into tau. So tau is the average time interval between this, यहाँ पे t था, यहाँ पे tau हो गया, average time interval between two successive collision, that you call it mean free time. Okay, so here you can write here like drift velocity का जो, और average velocity, और you can write here average velocity is equal to qe by m into tau. Similarly current density अगर हम लोग अभी calculate करेंगे depending upon the assumptions of the microscopic model, current density का formula already ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ, nq/vd, nq number of electrons per unit volume, q is the charge of one single electron or charge carrier, and vd is the drift velocity. In this case you can write like this, vd का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, n q square e by m into tau. So this is the formula for the current density. सब फॉर्मूला सब खातार लेख. ओके, सो हमको जहाँ प्रोब्लेम पड़थिबो जेतिकी डाटा देथिबो, यूजिंग दोस डाटा यू कैन फाइंड द अदर, माने जहाँ बाहर करियो देथिबो सेटा बाहर करियो पड़ियो. ओके, सो दिस इज लेट अस से इक्वेशन 5, दिस इज इक्वेशन 4, लेट अस अज्यूम. Okay, n is the number of charge carriers per unit volume. अच्छा, J equal to sigma E, we know it, sigma E, or you can write here 1 by rho E. Okay, so depending upon this equation, you can write like this, sigma is equal to what, n q square tau divided by me. This is equation number 6. Or you can write like this, rho, that is resistivity, is equal to 1 by conductivity, reciprocal of conductivity, m divided by n q square tau. m सबस्क्रिप्ट e जो लिख रहे हैं, नीचे जो e लिख रहे हैं, that is माने e माने कौन, माने mass of the electron. So confuse न करिके हमें खाली m लिखिबा. So m, suppose the question में प्रोटॉन दिया है, तो mass of the proton यहाँ पे डालेगा. Okay, so m divided by n q square tau. So this is the formula for resistivity again. So these are different forms of equation you have to remember to solve different kind of problem. Okay, so according to the classical model, resistivity and sigma, that means conductivity of a conductor, doesn't depend, is independent of the strength of the electric field. According to classical, what are the failures of the classical model theory? Failures. Failures of classical model.
or free electron model you can write here, free electron model. So classical model, what it said, that sigma or rho, that means resistivity or conductivity, is independent of electric field applied. But actually, in case of this electronics, or that means subatomic particles or atomic particles, sigma and conductivity is actually dependent on electric field. So that we'll study later. Okay, so in higher physics you can study it, but actually in those cases they do depend on the applied electric field. So these are the failures of the classical model. Okay. So again, what is the another main drawbacks of this classical gas model or ideal gas model, classical model, free electron model? So classical model said that V bar or V average, okay, average velocity is proportional to root over of T, that means root over of temperature. जो universal gas equation जेते calculate करथलो तमे एमती गोटे term पाइथिबो, you must have come across such kind of term, that the average velocity is proportional to the root over of temperature. But in real cases, actually in pure metals, Ohm's law kon कहला, it should be linear. But if average velocity is proportional to the temperature, that means root over of temperature, you will not find this linear graph. Okay, so that is again a failure of the classical model. Okay, so these are some of the basic demerits of the classical theory. And how would you answer it? Tau eti coili, so that is mean free time. Okay, so that you can write like this: the average time between two collisions, tau is average time between two collisions. Okay, so it can be related to mean free path. Mean free path. What is mean free path? The distance between two collisions. Okay, the distance between two collisions is called a mean free path. Okay, and suppose in this case you can write tau is time, mean free time. Tau can be written like this. Suppose L is the mean free path and V average, or like you can write like this. There are different notations in different books. Okay, so V bar or V average, so tau you can write like this: L by V average. Okay, so question रे suppose देखियो गोटे problem करिवा हमें. Okay, so let us solve a problem here. Right, find the mean free time tau. समझते लिखो, क्वेश्चन लिखो. Find the mean free time tau between collisions for the conduction electrons. Between collisions for the conduction electrons in copper. In copper. Copper resistivity rho देची 3.67 into 10 to the power minus 17 kg per second. Suppose the resistivity of this copper is given already. Okay, so how to find out the mean free time tau for conduction electrons in copper? So what we know from the formula, resistivity is equal to m by n e square tau. Just go through this equation. This equation number 7. M by n q square or e square tau. Okay, here we are calculating about electrons, so that is why e square tau. Okay, so thus from this equation, question what is the mean free time tau? Okay, we have to find out tau.
So from this equation you can write tau is equal to m by n e square rho, that is the resistivity. So number of conduction electron, let's given, okay, so let it is given. So number of conduction electrons per unit volume जदि हम देखिबा, so that is n is given already 8.49 into 10 to the power 28 per meter cube. Number of electrons per unit volume is given, resistivity is also given. So how to find out? Just put this formula tau. So tau is equal to, acha, I mean let us find out the denominator part first of all. So let us find out this denominator part. So right here 8.49 into 10 to the power 28, okay, meter cube per meter cube, that means m to the power minus 3 I can write here. So what is the charge of an electron? Minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb whole square, so it will be a positive quantity. Anyway it will be a positive quantity, okay, coulomb square. Again this tau resistivity, rho, that is 3.67 into 10 to the power minus 17, 3.67. Hello, कौन 3.67 into 1.69 into 10 to the power minus 8. अच्छा, sorry. Here এটা একটা ভুল দিয়েছি, এটা ভুল লিখে দিয়েছি। So this is rho is 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm meter. अरे এটা কহুন কে এই মোডে यूनिटটা ভুল লিখেছি, kg per second এমতি কেমতি আসিব, ohm into meter, that is resistivity, okay. So 1.69 into 10 to the power minus 8, 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. So this is the resistivity, okay, given. So now you find out ये जो value इटा जो 8.49 into 10 to the power 28, इटा minus 19 whole square, that means minus 38, okay, and here it is given minus 8, okay. So these equations, if you calculate, you can find out the value. I am just writing the value 3.67 into 10 to the power minus 17, okay. Finally by solving these numbers, okay, but here what I can write the unit, what will be the unit? एटी कौन अच्छी कूलम रा स्क्वायर अच्छी, so let it be coulomb square. एटी कौन अच्छी ओम अच्छी, ओम, okay, divided by m minus 3, एटी गोटे m अच्छी, that means m minus 2, okay. So divided by m square, here it is the unit given here. माने एटा कैलकुलेट करिवा जदी हमें एतिकी पाइ m square, एटा को हमें केमती लिखि परिबा? Here you can write like this, coulomb square into ohm ta kono, voltage by current, V by A, suppose V by A, that means voltage by ampere, okay, and meter square is here already there, meter square. So this again you can write like this. Can you write like this? So this c square by meter square into V by A, सेटा को तमे केमते लिख परिबो? C square into joule per coulomb divided by meter square into coulomb per second. कहीं की ampere माने कौन? Current is what?
rate of flow of charges, that means coulomb per second you can write here. Voltage you can write in terms of energy divided by charge. Okay, so potential energy per unit charge is nothing but volt. Okay, so in that case you can write here joule per coulomb. So this again you can write like this. अच्छा जूल पर कूलम इस कूलम कूलम कटि गला एटी तळे दीटा कूलम रहला माने एई जो कूलम ता जते तळ को डिनोमिनेटर हिजो c² कैंसल c² कैंसल सो जूल डिवाइडेड बाय जूल इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इस सब जो अछि ताको एटा को हम एम्ति लिखि परिबा जूल कैन बी रिटन लाइक दिस kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर kg meter square per second square divided by meter square per second. It's already there, meter square per second. So एटा को पुणी जदि हम भागिबा कोन पाइबा meter square कटि गले it is second square अछि second अछि, so you can write like this kg per second. So this term, after you calculate this term and you just play with the units, you can write like this 3.67 into 10 to the power minus 17 kg per second एमती लिखि परिबो हला. सो kg per second एटा जो लिखिलो एटा कोन तमे पाइलो रो पाइलो ए सॉरी टाउ टा पाइलो रुचि अच्छा denominator, this denominator you are getting kg per second. And what is the mass of the electron here in the numerator? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg divided by this quantity 3.67. अरे देखा होची ना नहीं तळटा into 10 to the power minus 17. Hello. Yes, sir. So finally you will get the answer in second. Kg per second divided by तळे कोन रहला ए सॉरी तळे रहला kg per second ऊपर रहला kg. So kg कैंसिल हो गेला सेकंड टा ऊपर पळेला तो तुमको फाइनली आंसर बाहरिबो सेकंड रे 2.5 into 10 to the power minus 14 seconds. So this is the final answer. So the mean free time tau between collisions for the conduction electrons in copper is 2.5 into 10 to the power minus 14 seconds. That means it is a very small time. Okay, so setiki time vitare a small time vitare there is a tendency of this copper electron, this free electron, to move from one atom to another atom, and there is a collision there. Okay, so the average time jodi ame dekhiba gote conduction ro, so the average time of conduction is this 2.5 into 10 to the power minus 14 seconds. So that is why you see since the average time is very small, and that is why whenever we switch on a circuit or whenever we connect something to a battery, it immediately within a fraction of second, but it is of the order of 10 to the power minus 14 seconds. So that is why suddenly it charges, or I mean TV logo on होची किमा रिमोट चिपु टीवी टा ऑन होची ई सब जो माने हमें जो इलेक्ट्रॉनिक ये कोन मेकानिजम्स. ओके, सो हमें लैपटॉप ऑन करले ऑन होची, तो सेही जो जिंसटा सेति पई एतिकी कम समय भितरे दैट इज द रिएक्शन टाइम यू कैन सी. ओके, so these are some of the basics of current and resistance chapter. हमें नेक्स्ट क्लास रे पुनी पढिबा पावर विषय रे पढिबा वर्क डन विषय रे पढिबा. ओके, सो प्रत्येक केस रे जोटी फोर्स रो कांसेप्ट आसिला, जोटी मास एक्सेलरेशन रो कांसेप्ट आसिला, so there will be definitely energy involved. Okay, so energy involved means there is a energy density involved. So there is a relation, always there is a relation between first year and second year physics. Okay, so you come across all those kind of stuffs what you have read in the first chapter. Okay, mane first year. Okay, so the mass acceleration and laws of motion I mean propose v equal to u plus at propose s equal to ut plus half at square you can use. Okay, so depending upon different situations you have to put such kind of equations. Okay, so there is always a relation
and you have to understand what is the physics behind it. Okay, so don't mug up things, don't buy heart things. Okay, so try to understand what is the physical phenomena occurring inside a system, inside a physical system, and if you understand the things you can perform better. सो अभी चक्रवर्ती या क्या चौधरी बोलिए, क्या मैंने समझ में आया कि नहीं? सोनालिका कुह, शाश्वती पंडा सोई पड़ला। हाँ पंडा कुह। बुझिएला सर। बुझिएला। और श्वेता चौधरी बोलिए। सर जो हाँ को सर शाश्वती जो को। टाओटाକୁ जो हाँ आपण बाहर कले सेटाକୁ रिलैक्सेशन टाइम भी कहंती। हाँ रिलैक्सेशन टाइम सेटा हमें जेतले कंडक्टिविटी केस रे कहबा सेटा रिलैक्सेशन टाइम कहबा किबा मीन फ्री टाइम एति कोन हैना। तार माने विभिन्न नामकरण दबार जो रिलैक्सेशन टाइम न कहि कि तब में शाश्वती भी कहि परिबो सेमति किछ नै हैला कि खाली बुझी जा फिजिक्स ता बुझो एंड ड्रिप वेलोसिटी को ड्रिप वेलोसिटी कोन को ड्रिप वेलोसिटी रा आउ गोटे फार्मूला एक्सेलरेशन इनटू टाउ भी तो हबो ए टाउ डेफिनेटली हबो काई हबोनी हबो कहबा डिफरेंट प्रॉब्लम जतबे आसीबो हम सामना को हमें कोनटा सेठी पकेबा दैट इज द मेन माने सेटा सेठी हमें हमर आईक्यू काम करियार अछि। ओके तो सेठी किछ नै हम सी फार्मूला एवरीवन कैन बाय दैट to buy that formula. This is not a very difficult task, but the point is depending upon the situations what to put so that we can calculate the final answer. So that is the main okay. So thank you for today's session. We'll meet in the next class on Tuesday. Okay, so tomorrow some other faculty will take your class, that is laws of motion se jo sir पढौछन्ती बुझी पाउछु कि नै तो कहि परिबी सर। हां को सर आपण जे कहितले गोटे YouTube चैनल नाटा सेटा आउटरे कहबा। हां सेटा कहउछु सेटा होची स्वयं पाठशाला ओडिसा रो मु लिखि दोची एठी पाठशाला ओडिसा एतरे व्यू चैनल को जीवो व्यू चैनल गुटे थिबो व्यू चैनल जाई की प्लेलिस्ट को जीवो प्लेलिस्ट सेठी थिबो +2 समथिंग लाइक दैट +2 CHSE CBSE एंती कोन सब थिबो जाई की देखिबो। मैं आउरी छाड़ी भी जे एक्चुअली मोर दिए देह बोल नै मोर काश होची वॉइस ता भी माने भल रे आसुनी बोली छाडो आउरी बहुत उठे क्लास रे आमी सब प्रॉब्लम जो सॉल्व करते इच्छा करू आउ गॉस लॉ तापरे जो पढै छी आगु को गॉस लॉ ए सब जो पढै छी कैपेसिटर्स से ऊपर भी मु पर छाड़ी भी किंतु YouTube रे कोन होची आमी एठी जो गारागारी एमती सब जो करू छे सेठी टिके एते गारागारी कले भल लागियोनी एने दैट इज ए ओपन सोर्स माने जेटा समस्त देखिबे सेटा सब दिन पई रहि गला ना डाटाबेस रे तो सेति में टिके सुंदरिया बनिया को पडुची तो ताको ता पई टिके माने कष्ट करिया पडुची। तो एनीवे तमे एठी बुझो एंड से गुडा को भी फॉलो करो सो दैट माने जो प्रीवियस क्लास गुडा जहां भी बुझी पारनो आ से वीडियो गुडा को मु बेटर वे रे माने छाड़ी भी जेते भी छाड़ी भी भलो भाबरे जेमति छाड़ी भी जोटा कि किछि माने गारागारी हे नथिबो जस्ट पूरा टू द पॉइंट थिबो किछ होगा हला। एंड मु गोटे जिंस कहितांती तम माने सब जो +2 पास करिचो हला तम माने सब एनडीए एवडा सब दउनो कि किछि just go for it mane have a try at least once NDA National Defense Academy it is only for boys I think I don't know whether it is open for girls or not National Defense Academy oda सब दियो कोन अछि एथरे भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एई सब क्वेश्चन आसे and NDA पाइबा एते सहज जिंस न you can go for it देखो जाय कि सब इंटरनेट रे सब बेले रहउछ
ଜାଣିଛ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ ତ ସବୁବେଳେ ଅନଲାଇନ ରହୁଛ, फालतू जिन न देखी देख ये फॉर्म के बाहर केमती कौन तार एलिजिबिलिटी कोठी फॉर्म पड़िबो सो यही सब जिन पाइबा गोटे प्रेस्टिजियस थिंग जदि पाइगल देन यू कैन गो फॉर डिफरेंट लाइक आर्मी एयर फोर्स ओके नेवल एनसीसी so there are different branches in NDA so ସେମାନେ ତମକୁ ପଢେଇବେ ତାପରେ ତମେ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब सेठी पढिबो बट तार एप्लीकेशन ओरिएंटेड हेजिवो जिनसटा सेठी तमे ग्रेजुएशन करिवो दे विल टीच यू इंजीनियरिंग दे विल टीच यू every kind of science so you don't think that only these IIT people are the so called engineers and they know everything okay so semti kichi nai you can go for it the boys come se come yoda pokao army air force yoda sab pokao okay so thank you